Okay, so this lecture is about flow of errors. This is part 2. Okay, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है और डिवीजन प्रोसेस है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, उसमें एरर्स कैसे फ्लो करके तो आंसर के अंदर अपीयर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, मीन्स द फ्लो ऑफ एरर्स ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। नंबर 1, flow of errors during subtraction process. During subtraction process. तो इसमें हम लेट कर सकते हैं, लेट एक्चुअल वैल्यूज जिन वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दे आर नेम्ड एज x1 एंड कैपिटल X2, एंड जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वो है स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2। ठीक है, यानी कैपिटल X1 और कैपिटल X2 एक्चुअल वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को ऑब्टेन करते वक्त जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आती हैं वो है स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2। तो जो एरर्स हैं, एरर्स इन स्मॉल x1 एंड स्मॉल x2 और डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2। डेल्टा x1 जो है वो स्मॉल x1 के अंदर पॉसिबल एरर है, और डेल्टा x2 जो है वो x2 के अंदर जो है वो एरर है। ओके, कैपिटल X1 और कैपिटल X2 एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, इसलिए उनके अंदर एरर्स नहीं है। जो स्मॉल x1 और स्मॉल x2 हैं, ये क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, और एरर्स जो होती हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में होती हैं, इसलिए स्मॉल x1 में जो एरर है उसको हमने लिखा है डेल्टा x1, और स्मॉल x2 में जो एरर है उसको हमने लिखा है डेल्टा x2। ओके, हम ये देखना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में एरर जो है, एरर्स जो हैं वो कैसे फ्लो करके आंसर में अपीयर होती हैं। ओके, तो इसमें दो सम्स इन्वॉल्व, दो डिफरेंसेस इन्वॉल्व होंगी। वन विल बी द एक्चुअल डिफरेंस। ओके, द मीन्स एक्चुअल डिफरेंस, actual difference means the answer which will be obtained by subtracting the actual values. Okay, और इसको हम कैपिटल X कह सकते हैं। ओके, कि कैपिटल X1 और कैपिटल X2 जो कि एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल डिफरेंस। ओके, और इसी तरह जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस जो होगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। तो दैट विल बी स्मॉल x1 माइनस स्मॉल x2, और इसको हम नाम दे सकते हैं स्मॉल x का। अब ये हमारे पास दो आंसर्स हैं, दिस इज एक्चुअल डिफरेंस एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितनी एरर है, यानी दिस इज एग्जैक्ट, दिस इज एक्चुअल डिफरेंस एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। स्मॉल एक्स इज अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। तो जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है इसके अंदर एरर मौजूद होगी। ओके, तो वो एरर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस मीन्स एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट की फॉर्म में, एब्सोल्यूट एरर की शक्ल में। सो एब्सोल्यूट एरर इन स्मॉल एक्स मीन्स जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है स्मॉल एक्स, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है। फॉर्मूला क्या है? तो एक्चुअल वैल्यू इन एक्चुअल डिफरेंस माइनस द अप्रोक्सीमेट, या फिर अप्रोक्सीमेट माइनस एक्चुअल मॉडुलस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर इन एनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स। तो आपके पास आएगा कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? कैपिटल X1 माइनस कैपिटल X2।
और स्मॉल x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x1 माइनस small x2, okay, and the modulus. Now we can put the value of capital X1 and capital X2, and keep in mind here कि जो capital X1 है, here capital X1 is ये पीछे addition process में भी हम लिख चुके हैं कि capital X1 जो है, this is the approximate value small x1 plus minus the error in the approximate value, and जो कैपिटल X2 है that is equal to small x2 and plus minus the error in small x2. Okay, so this is a connection between the actual value capital X1 and small x1 and capital X2 and small x2. So we can put these values of capital X1 and capital X2 over here. Okay, so look at, we will put the value of capital X1, that will be, let's say, small x1 plus minus delta x1. Okay, and then minus open करेंगे तो this will be what you say delta x2 and minus plus delta x2. Okay, and minus x1 plus x2. Okay, यहाँ पे आप माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो this will be minus x1 plus small x2, right? And so this one you will be cancelled with this one, small x1, and we say जो आपके पास है, जो हमने वैल्यू लिखी थी इधर स्मॉल x2, और इससे सॉरी इसमें जो वैल्यू लिखी है, एक तो वैल्यू ये थी और ये थी जस्ट स्मॉल x2. So small x2 will be cancelled over with this x2. So we will be left with plus minus delta x1 and minus plus delta x2. Okay, so this is we say absolute error in delta x, in x, absolute error in x, और इस absolute error in x को हम नाम दे सकते हैं, let's say delta x. Okay, so delta x coming to be equal to, we say modulus plus minus delta x1 minus plus delta x2, its whole modulus. Okay, and when we will apply this modulus separately to plus minus delta x1 and minus plus delta x2, in that case this equality will be converted into less than equal to inequality. Okay, so this means according to the property of what you say the modulus operation. Okay, so that means the delta x will become less than equal to plus minus delta x1, its modulus, plus minus plus delta x2. Okay, and you know that when we take the modulus, it will be minus will also be converted into plus, so this way delta x is less than equal to just delta x1 and plus delta x2. ओके, इसमें भी जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस तो ऑलरेडी जो उसके ऊपर मॉडुलस को ऑपरेशन लगाएंगे तो वो प्लस ही रहेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, स्मॉल एक्स, एंड स्मॉल एक्स इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस. स्मॉल अप्रोक्सीमेट डिफरेंस के अंदर जो एरर आ रही है डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर आ रही है, दैट इज कमिंग टू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, their moduli, their modulus operation. Okay, and this means what you say, this means इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जब भी हम एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, we try to find maximum possible error. Okay, so यहाँ से इनइक्वालिटी से आ रहा है कि डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू, लेस का मतलब है कि इससे लेस तो फिर जीरो हो सकता है. ओके, तो जीरो एरर, we will try to find out maximum value for the error. So that's why I'm looking at delta x is equal to delta x1 modulus plus delta x2 modulus, and that is what you say maximum delta x. Maximum delta x, that will be equal to delta x1 plus delta x2. और ये जो मैक्सिमम एरर होती है इसको नॉर्मली एरर ही बोला जाता है.
Okay, इसलिए or simply what you say simply delta x can be written as the sum of the two errors. Okay, this is the result. तो हमने देखा कि जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है स्मॉल x1 और स्मॉल x2 का जो डिफरेंस है उसके अंदर कितनी एरर आ रही है, दैट इज इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स. ये डेल्टा x1 जो है ये दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन स्मॉल x1 और डेल्टा x2 जो है दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन स्मॉल x2. So here what you say absolute error in the approximate difference is coming to be equal to sum of the two absolute errors. Okay, just like the error in case of summation process. Okay, now we move on to the next operation. There is a propagation of error during the product process or the multiplication process. Okay. Okay, so number 2 operation here, actually this is a number 3 operation, that is a multiplication process. लेकिन इस lecture के point of view से this is what is a second arithmetic operation, that is a flow of errors. flow को आप propagation भी कह सकते हैं, propagation during multiplication process during multiplication. Okay, so इसमें भी just like we can take two values, actual values. Okay, approximate values, small x1, small x2, errors, they are delta x1 and delta x2. Okay, actual product को हम नाम दे सकते हैं capital X का, and this will be capital X1 into capital X2. They will be multiplied, and the approximate product और इसको हम नाम दे सकते हैं small x का, and this is small x1 and small x2, right? Now absolute error in the approximate product means absolute error. What do you say? Absolute error in small x, that is the approximate product. Small x is the approximate product. Approximate product में error हम find कर सकते हैं, and that will be equal to again the same formula, actual product minus the approximate product. Okay, and again you know that a capital X1 is small x1 plus minus delta x1, and capital X2 is small x2 plus minus delta x2. So we can put these values of capital X1 and capital X2 over here. Okay, so this will give you putting these values in this case here, and there this is x1 plus minus delta x1 multiply with x2 plus minus delta x2 and minus x1 x2 modulus. Okay, and this is coming to be, what do you say, if you multiply x1 x2 then x plus minus x1 delta x2, and then this will multiply plus minus delta x1 into x2 and minus plus minus, so this will be plus, what do you say, delta x1 delta x2 and minus x1 x2 whole modulus. Okay, and so this will be cancelled with this one. Okay, so we will have over here, what do you say, we can name this absolute error in
small x as what do you say, इसका हम नाम रख सकते हैं delta x. Okay, so delta x is coming to be equal to modulus plus minus x1 delta x2 and plus minus delta x1 into x2 and plus delta x1 delta x2 whole, what do you say, whole modulus. Okay, so uh, we can say that, let's say delta x1 and delta x2 are very small, let's say they are less than 1. In that case their product will become further what do you say, smaller. So we can say that if, what do you say, if delta x1 and delta x2 are very small, are very small, that is what do you say, they are very small, what do you say, as compared to, let's say, 1. Okay, under this assumption, okay, less than 1, that means delta x1 delta x2 will become further small. Okay, so that means delta x1 and delta x2 can be approximately taken to be approaching to 0. Okay, so in that case we can take delta x is approximately, इस approximation की वजह से यहाँ पे approximation आ जाएगी. This is what is say plus minus x1 delta x2 and minus plus minus delta x1 into x2 whole modulus. Okay, this one is approaching to 0, delta x1 and delta x2. So when we apply, let's say, the, we say separate modulus operations, that means delta x will be less than equal to x1 delta x2 modulus and plus delta x1 x2 modulus. Okay, so this will be less than equal to. Okay, okay, so now यहाँ से we can further, what do you say, simplify. So this is delta x is less than equal to, we will say, x1 delta x2 modulus plus delta x1 into x2 modulus. Okay, so from here we can say that maximum delta x will be equal to x1 into delta x2 modulus plus delta x1 into x2 whole modulus. Or simply we can write it, what do you say, delta x, just delta x. जब भी आप लिखेंगे delta x, so that means what do you say, maximum absolute error. Okay, so delta x can be taken to be equal to x1 delta x2 plus delta x1 into x2. Okay, so आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो absolute error है in the approximate product, that is coming to be equal to this one. लेकिन यहाँ से this expression, what do you say, this expression is not much useful. Okay, so in order to convert it into useful form, into more meaningful form, we can move on and we can say, let's say, divide on both sides with, what do you say, small x, that is what do you say, the approximate product. So we will have here delta x over x, that will be equal to x1 delta x2 over x and plus delta x1 into x2 over x. Okay, and we know that the value of x is x1 x2. This is the approximate product, so we can use the value of small x to be equal to small x1 into small x2 on the right side. So this will be small x1 delta x2 over x1 x2 plus delta x1 x2 over x1 x2. Okay, so this will cancel out. Okay,
So this will be coming to be equal to delta x2 over x2 plus delta x1 over x1 modulus. Okay, so this is coming to be equal to delta x over x, and this is named as a relative error. What do you say? A relative error. Okay, relative error in x, यानी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है x, अच्छा जो रिलेटिव एरर है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड की जा सकती है, यानी डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेट वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं. नॉर्मली हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन सर्टेन सिचुएशंस वी कैन आल्सो डिवाइड द एब्सोल्यूट एरर विद द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट रिलेटिव एरर. So this is relative error in x, and you know that this is a relative error in x2. This is a relative error in x2, and this one is relative error in small x1. तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो relative error in the approximate product है, that is actually equal to the sum of the two relative errors. Okay, so product के केस में जो relative error है approximate product के अंदर, that is actually equal to the relative error in small x1 plus a relative error in small x2. Okay, so in case of product, the error in the approximate product is equal to sum of the relative errors in the approximate values small x1 and small x2. Now we move to the last case, that is the case of the division process. Okay, so there is what do you say, the third case, a flow of errors during division. Okay, during division. So again, there are actual values small capital X1, capital X2, and approximate values are small x1, small x2. Their errors in the approximate values are delta x1, delta x2. Okay, and they are connected with each other. Capital X1 is small x1 plus minus delta x1, and capital X2 is equal to small x2 plus minus delta x2. Okay, and now what do you say, actual जो division है, division को आप actual during the question means जो division से answer आता है, the answer obtained from the division process can be called as quotient. Okay, so आप कह सकते हैं कि जो actual quotient है, that is what do you say, capital Q, and अगर आप दूसरे जो नोटेशन है जो पिछले जो प्रीवियस अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपने इस्तेमाल की उसी को यूज करते हैं. कैपिटल X is actual division answer, that is x1 over x2, and the approximate quotient or the division answer is small x1 over small x2. Okay, अब जो absolute error है in the approximate answer from the division, that is delta x, and that can be obtained from capital X minus small x. और इनकी वैल्यूज अगर आप पुट करें तो दे आर व्हाट यू से कैपिटल x1 ओवर कैपिटल x2 माइनस स्मॉल x1 ओवर स्मॉल x2, राइट. इसको हम प्रोसेस करते हैं. So here delta x is coming to be equal to putting the value of capital X1, that is x1 plus minus delta x1 over x2 plus minus delta x2 and minus x1 x2. Okay, अब इसको by taking the LCM, so this will be x1 plus minus delta x1 into x2 and minus x1 into x2 plus minus delta x2.
over x2 into x2 plus minus delta x2 whole modulus. Okay, so from here we can what do you say, you can try to take something common. Let's say अगर आप इसको common ले लें, वो denominator है, इसको आप बाहर ले सकते हैं. This is 1 over x2 and x2 plus minus delta x2. Okay, and this can be put also in the modulus, and this is small x1 plus minus delta x1 x2 and x1 into x2 plus minus delta x2. Okay, and this is delta x. तो जैसा हमने प्रोडक्ट केस में किया था कि रिलेटिव एरर फाइंड की थी, सो इसमें भी हम रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हैं. डेल्टा एक्स ओवर स्मॉल एब्सोल्यूट एरर तो ये आ गया आपके साथ, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ओके, मीन्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दिस विल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x2 into x2 plus minus delta x2. Okay, and inside will be x1 x2 and plus minus delta x1 into x2 minus x1 x2 and minus plus x1 into delta x2 whole modulus. So this will be cancelled with this one. Okay, so this will be coming to be equal to 1 over x2 plus minus delta x2 modulus, and the modulus we say plus minus delta x1 into x2 minus plus x1 into delta x2 for modulus. Okay, इसको हम further process करते हैं. Okay, so इसको प्रोसेस करने के लिए अगर आप this is the answer for some what do you say delta x. So if you apply the modulus separately, it will become what do you say delta x less than equal to 1 over x2 plus minus delta x2 modulus. This is already separate modulus, and this is what do you say product, I mean multiplication, and the modulus of delta x1 into x2 and modulus plus this will be x1 into delta x2 modulus. Okay, like this. Okay, this will be lesser. So just like that, we can write maximum delta x. Okay, this will be equal to 1 over x2 into x2 plus minus delta x2 and what do you say same means terms will be taken here. Okay, inside what do you say the product. Okay, the same one, this one and this one. Okay, so in order to make this expression more meaningful, we can divide on both sides by what do you say small x. Okay, this will be relative error, and this will be equal to what do you say so 1 over x2 plus minus delta x2 and modulus and bracket okay bracket. This is a delta x1 into x2 its modulus plus the modulus of x1 into delta x2. Okay, so because we have divided with x, so we will divide with x on both sides. So over here we will put here x also here and also here, and we know that because
small x is actually x1 over x2. So we will put these values on the right side. So this will be equal to the modulus of 1 over x2 plus minus delta x2. Okay, modulus bracket, this is a delta x1 into, what do you say, x2 over x1 over x2, and its modulus plus, this is a x1 delta x2 over x1 over x2. Okay, now this x1 can be cancelled with this one. Okay, and what do you say, इस x2 को आप inside लेके जा सकते हैं, इस x2 को. Okay, look at this will be equal to 1 over x2 plus minus delta x2 modulus, and inside will be this x2 can be taken inside in order to simplify. So this is delta x1 into x2 over, this x2 can be taken inside, so this will be x2 multiplied by x1 over x2. So okay, so from here, what do you say, this x2 can be cancelled with this one. Okay, then this is modulus, and plus the other modulus is over here, this x2 can be taken inside, and this can be written like this, what do you say, delta x2 over 1 over x2 multiplied with x2, right? Look at this, 1 over x2 will be multiplied also here. Okay, so this x2 will be cancelled with this this x2. Okay, so this is the modulus. Okay, so from here we further simplify. Okay, so delta x over x. Okay, this is coming to be equal to 1 over x2 plus minus delta x2 modulus, and inside is, now after cancellation we are having here delta x1 over x1 and x2 modulus, and plus over here we are having here delta x2 only. Okay, right? Okay, so from here we can take this x2 outside, so this will be x2 over x2 plus minus delta x2 whole modulus, and inside will be left delta x1 over x1 modulus, and plus, because we are taking x2 outside, so over here we will be writing here delta x2 over x2 modulus. Okay, and we will say that let x2 over x2 plus minus delta x2 is almost 1. Means we can just assume that delta x2 is very small as compared to x2, so small that जो x2 ऊपर है और जो x2 plus minus delta x2 है, this is almost 1. Means because, what do you say, because if we assume what do you say, what do we assume, that is x2 plus minus delta x2 is almost x2. So denominator का जो x2 plus minus delta x2, that will be approximately x2. So x2 will be cancelled with x2. So that's why this is approximately 1. Okay, under this assumption. So that means delta x over x will be approximately equal now. This is what do you say? This will become 1. This will be 1. Okay, this is 1. Approximately 1. Okay, so we'll be left only with this one, delta x1 over x1 modulus plus delta x2 over x2 modulus. Okay, so so students, you see that this relative error in the quotient, relative error in the answer which is obtained from the division process, that relative error is also coming to be equal to the sum of the two relative errors, the relative error in x1 plus the relative error in x2. Okay, so so it means in case of product, in case of a division process, in both cases, the overall relative error in the answer means a relative error in the product as well as a relative error in
in the answer from the Devine process, that is equal to the sum of the two relative errors. Okay, so that's all. Thank you.